So once again, हमने today we have seen that what are the circuit symbols and all. So I've collected some image from the site and I am just sharing with you. And as you can see that this is cell. Okay, this is the positive terminal and this is the negative terminal. लेकिन एक से ज्यादा सेल अगर मुझे लगाने हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को बैटरी कहते हैं, तो ध्यान से देखो, प्लस के बाद ऑब्वियसली माइनस आना चाहिए. ये दिख रहा है, ये माइनस इसके साथ कनेक्टेड है और इसका जो प्लस था वो यहाँ पर है. इस तरह से यहाँ पर कितने सेल लगे हुए हैं? एक और एक, इन दोनों को मिलाकर दैट इज 2. और जैसे मैंने बताया कि स्टैंडर्ड वैल्यू, अगर सेल की कोई वैल्यू वोल्ट यहाँ अप्लाइड नहीं दिखा रखा, स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं 1.5. सो हियर वी हैव 2 cell. So if anybody asks you what is the volt appear to be in this combination of 2 cell, your answer will be 3 volt. Okay, then this is a simple straight connecting wire. If you want to join a wire with the connecting wire, then this is. If you want to have a wire and not connected, then this will be. This is going to be the, you can say, a lot important terms and coming up in the grade 10. This is called resistor, fixed resistor. That means this is a wire which is having a fixed resistor that is opposing the flow of electrons, hence the current and resistor. As you see, you'll be seeing that there will be an inverse ratio. But if I want to change the value, here I cannot change, that's why it's fixed. But if I want to change the value according to the requirement, जैसे आपका फैन का रेगुलेटर जो होता है उसको आप कम बेसी करते हो, चेंज कर पाते हो, बिकॉज ऑफ दिस ओनली, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस, और उसी का नाम है रियोस्टैट. ये सिंबल और ये सिंबल दोनों एप्लीकेबल है, क्योंकि अब एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस मिलेगा, हो सके पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट दिस, और आपको एक में ये भी दे दे, एक में ये भी दे दे, एक में ये भी दे दे एंड ऑल, सो नथिंग टू गेट कंफ्यूज्ड. ओके, फिर आपने नाम सुना था एमीटर. एमीटर, यू नो दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग द करंट generated inside the circuit. Okay, this is the plus, this is the minus. Voltmeter is used to measure the voltage, plus minus. Galvanometer doesn't have any sign because galvanometer is used to depict the presence of current. जैसे जो अपना मैकेनिक आता है एंड टेस्टर लेकर आता है, टेस्टर इनपुट करके लाइट चेक करता है, बल्ब उसका जो टेस्टर का एंड होता है, if the light glows then he says the currents are coming in this circuit. That is, galvanometer is used to detect the presence of current. उसके बाद आप देख सकते हो this is plug, की और switch. ये ओपन है. ओपन का मतलब होता है कि सर्किट ब्रेक हो गया, और ये क्लोज है, दैट मीन्स नाउ सर्किट इज कंप्लीट, करंट कैन फ्लो. और ये रहा आपका बल्ब का सिंबल. ग्रेड 10th के लिए इतना ही सिंबल आपके नॉलेज में रहना चाहिए. एंड व्हाट इज द टॉपिक? आई कैन से दिस इज द सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. ओके, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक बिगिन होता है, फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स you will be having the chapter knowledge in depth 1. So if I analyze the topic which we have done till now in electricity, how many formulas now? कितने formulas आपके आ गए? तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए था चार्ज Q is equals to N into E, right? इसी तरह मैंने अभी इसके पहले एक एनिमेशन वीडियो आपके साथ शेयर किया है, आप उसको चेक करना. E की वैल्यू आपको पता है, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, ये सब चीजें आपको बता दिया है. VW/Q आपने देखा, I is equals to Q upon T देखा. It is very important, those who don't enjoy physics, those who don't like science, at least इस तरह से चीजों को कम से कम आप कोशिश तो कर सकते हो. What else? The formulas will be coming up. तो right now ये 3 formulas पे अपन ने काम किया. What is milli ampere, micro ampere पे काम कर लिया हमने. फिर ये सिंबल्स आ गया. डेफिनेशन कौन कौन सा दिमाग में रहना चाहिए जो खुद बना लो, 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, 1 कूलम, राइट. व्हाट नेक्स्ट विल बी कमिंग अप इज दैट Ohm's law.
What is that? Ohm's law. If you brief out in a language, it's a law given by Ohm. And since this is a law means universally accepted, but here it has been found, then in certain condition this law is not applicable. इसलिए इसका start होता है कैसा? At constant temperature and pressure. क्या बोला? At constant temperature and pressure, the current flowing through any conductor, the current flowing through any conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor. Next video उसी पे रहेगा मेरा. तो यहां से आपके पास एक रिलेशन आएगा, that will be that V is directly proportional to I. वोल्टेज अगर ज्यादा है तो करंट का फ्लो भी ज्यादा रहेगा. And that is V equals to IR. यहां से एक टर्म आना चालू हो जाएगा R, रेजिस्टेंस, रुकावट. किसका? इलेक्ट्रॉन्स का. कैसे पता चला? क्योंकि V इक्वल्स टू अगर IR है तो मैथ्स कहता है R होगा V upon I. That is what we are going to see. Okay, so just check it out and please follow the video. मेल जोड़ो अपना, मेल ID भी मैंने मांगा है. I am sharing everything. Kindly check every notation which you are receiving through any mode from my side. Okay, so I'll be now next I'm going to share with you something about Ohm's law. Now here, with the help of this video, we will be trying to explain you that how are the resistance, as you can see on the screen, current, voltage are related, potential difference related to each other, which new formula is going to come on our way, what factors the resistance depends, and this experiment you will be doing in the school, in the lab also. And what sort of questions can you be understanding from this point of view? The first question, which is a regular question for grade 10, is define and derive Ohm's law. Define and derive. In grade 9 we have done so many derivations. Define and derive Ohm's law. When this question is asked, I repeat, define and derive Ohm's law, then what are we supposed to write? We'll be writing the definition जब भी आएगा. Then we'll be deriving it, a small mathematical expression. हम दो ग्राफ बनाएंगे, जैसे आज सेकंड बैच में मैंने बताया था, we'll be continuing. दो ग्राफ बनाएंगे, इसमें एक ग्राफ होगा, दूसरा हम बताएंगे. And then we will be defining 1 ohm. ये पूरा एक आंसर का हिस्सा होगा जिसका क्वेश्चन था define and derive Ohm's law. But if the question comes define and verify Ohm's law, I repeat, define and verify Ohm's law, तो ये जो आप एक्सपेरिमेंट अभी देख रहे हो ना, इसमें एक चार्ट आएगा, वही चार्ट आपको पेज नंबर 204 पे मिलेगा और वो आपको लैब में कराते हैं, लेकिन थ्योरी में पूछते हैं, तो उसका आंसर कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा इस वीडियोस में भी शायद. ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करेगा? तो रेजिस्टेंस आप देखोगे इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर. वायर की जितनी बड़ी होगी उतना उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. और आप देखोगे इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस. जितना मोटा वायर होता है ना उतना रेजिस्टेंस कम होता है. और आप ये खुद देख सकते हो क्लास खत्म होने के बाद. जरा अपना एसी कनेक्टिव वायर को देखना और एक पंखा कनेक्टिव वायर को देखना, दोनों के थिकनेस में आपको अंतर नजर आएगा. मोटा वो होगा जो ज्यादा करंट चाहता है और वो है आपका एयर कंडीशन. ओके, और यहां से फिर आपको एक नया टर्म मिलेगा जिसको हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी, और इसी का दूसरा नाम बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस हर एक सब्सटेंस में होता है लेकिन कम ज्यादा हो सकता है ड्यू टू देयर लेंथ, एरिया. लेकिन जो वर्ड मैंने अभी बोला ना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसका दूसरा नाम होगा रेजिस्टिविटी, वो पर्टिकुलर मटेरियल का कभी नहीं बदलेगा. यानी कि 1 मीटर का कॉपर वायर लो और 1000 मीटर का कॉपर वायर लो, इन बोथ द केस रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम. एक 5 मिलीमीटर थिकनेस का लूं और एक 50 मीटर थिकनेस का लूं, ओके, तो भी उसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी. क्या बदलेगा? बदलेगा रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी किस पे होगी?
वो किस पे डिपेंड करेगा? तो वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, एक मटेरियल का, जैसे आपको पता है कुछ गुड कंडक्टर होते हैं, कुछ इंसुलेटर होते हैं, कुछ सेमीकंडक्टर होते हैं, और एक डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। कौन? रेजिस्टिविटी। जहां रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट आपको अभी दिखेगा ओम, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम, करंट का ऐसा यूनिट एम्पेयर, राइट? पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट, चार्ज का कूलम, उसी तरह रेजिस्टेंस का ओम, कंडक्टेंस जो मैं बताऊंगा उसका यूनिट है एमएचओ मो, और रेजिस्टिविटी जो टर्म आएगा उसका यूनिट होगा ओम मीटर। सो प्लीज चेक दिस वीडियो। Means to oppose. Just like during the holidays, you may have a resistance to get up early, or you may have a resistance to study. Similarly, do you know that in a wire there is an opposition, a resistance to the flow of current? I'm going to make these concepts really easy for you. And I hope after watching this video, you won't have any resistance to try the quiz and the top 3 questions on this topic. Links are given below the video. Ohm's law is a very important law in electricity. Ohm's law gives us the relation between electric current and electric potential difference. Now, do you remember what is electric current? Electric current is the flow. We all know what is electric current, right? So what is electric current? It is the rate of flow of charge, that is Q by T. Charge divided by time. Now, what is the unit of current? That, again, you all know that unit of current is ampere. Potential difference. The potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to the other point. The formula of potential difference is work done divided by the charge. And what is the unit? Correct. The unit is volts. Electric potential difference is also known as voltage. Potential difference is like an electric pressure that is pushing the charges to move in a circuit. So potential difference causes electric current. Now we want to see how electric current changes when the potential difference is increased. Let's take a look at our setup here that we are going to use. This is our voltage supply. It's called a battery eliminator because you don't need to use cells like this. We can change the potential difference supplied by it by turning this knob. As you can see here, we can get different voltages like 2 volts, 4 volts, 6 volts, and all the way up to 12 volts. This voltage supply supplies DC voltage, just like a simple cell. DC stands for direct current. Current flows only in one direction. The voltage supply is connected using this red wire to this instrument called an ammeter. The ammeter is used to measure electric current. And the ammeter is connected using this wire to this black box. The black box contains a nichrome wire in it through which current can pass through. This is usually called the resistor. We are going to measure the current passing through the wire in the black box and the potential difference across the wire. To measure the current through the wire, we will use this ammeter. The ammeter is connected in series with the wire in the black box. To measure the potential difference across the wire, we will use this instrument called the voltmeter. As you can see, it is connected in parallel to the wire. If you draw the circuit diagram for our setup, it will look something like this. Here is the nichrome wire that is inside the black box. The voltmeter
which is marked with the V symbol, is connected across the ends of the wire. The voltmeter is connected in parallel. And the ammeter, which is marked with the A symbol, is placed in series with the wire. Do you notice that the battery is marked with an arrow? Since our battery is a variable voltage supply, we can change the voltage of the battery. For our experiment, we are going to change the potential difference across the wire, which is inside this black box, by turning the knob on our voltage supply. And we'll make a table of our observations, the values of potential difference across the wire and the corresponding current in the wire. So are you ready? Let's go ahead and start our experiment. Now I'm going to switch on the voltage supply. But as you can see, the knob is at 0 volts. So no voltage is being supplied. As you can see, the voltmeter shows 0 volts and the ammeter also reads 0 ampere. As expected, when the potential difference across the wire is 0, the current in the wire will also be 0, since potential difference is needed for the flow of electric current. So if there's no potential difference, there will be no current. And this is our first data point, 0 volts and 0 ampere. Now let's increase the voltage to 2 volts and check the reading in the ammeter and voltmeter. As you can see, the potential difference across the wire is now 1.2 volts. And note that this ammeter. So you can see that what they're trying is we are trying a relationship which is being shown between voltmeter and ammeter, and that is the outcome of Ohm's law. तो जब आपका V0 था, I0 है, अभी जैसे आप देख सकते हो, अगर आपका V 1.2 है वोल्ट, ये मिली एम्पियर में, राइट, यू कैन ऑब्जर्व दैट एंड यू ऑल नो 1 मिली एम्पियर क्या होता है. तो इट इज अप्रोक्सीमेटली जैसे लग रहा है कि कुछ 30 के आसपास होगा या जो भी है. सो अकॉर्डिंग टू दिस यू विल बी इंडिकेटिंग द वे वोल्ट इज चेंजिंग, जिस रेशियो से वोल्टेज चेंज होगा ना, यू विल बी फाइंडिंग दैट विद द सेम रेशियो करंट विल चेंज. यानी कि जब आप V अपॉन I को डिवाइड करोगे ना, हर केस में जो चार्ट अभी आपने देखा, यू विल बी गेटिंग V अपॉन I जो R देगा आपको. V अपॉन I क्या देगा? रेजिस्टेंस देगा. एंड यू विल फाइंड इन ऑल द केसेस द रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी कांस्टेंट. दैट इज व्हाट Ohm's law wants to indicate. Meter is marked in milliampere. The reading in the ammeter is 30 milliamperes, which is 0.03 ampere. Note that the wire does not get the full 2 volts from the voltage supply. The potential difference across the wire is 1.2 volts. This is our second data point. Let's add it to the table of observations. Now you can see that this is the table which I am talking. When the question comes that verify, अगर verify question आएगा और आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लेकिन आप जब नोटबुक में लिखते हो थ्योरी पेपर में, तो आप डेफिनेटली वहां लैब की वैल्यूज तो लिखते नहीं हो. तो आप क्या करोगे, ये वैल्यूज तो बकायदा ऑथेंटिकली हमने देखा, अभी लिया इसने, राइट. पेज नंबर 204 जब आप एनसीईआरटी बुक का देखोगे तो ये जैसे सीरियल नंबर 1, ठीक है, यहां पर मैं बोलूंगा मैंने एक सेल लिया, तो उसका स्टैंडर्ड वोल्टेज क्या लेते हैं? 1.5, राइट, 1.5. सिंस मैं हाइपोथेटिकली एक फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये करंट मैंने अपने मन से ले लिया, सपोज 3 एम्पियर. मैंने क्या किया, इसी चार्ट को पेज नंबर 204 देखना, हम आगे आपको क्लास में बताएंगे. सो नंबर ऑफ सेल अगर मेरा 1 है तो V कांस्टेंट है 1.5, करंट मैंने अपने मन से लिया 3 एम्पियर, और अभी अभी हमने सीखा कि V अपॉन I R होगा, ओम्स लॉ यही बताता है. तो इस तरह से जो नेक्स्ट चार्ट आपको नजर आ रहा है उसमें हम किसका कॉलम बना लेंगे? R का. So you will be finding the first star. Now suppose I have got 2 cells. So when I have 2 cells, okay, जब मेरे पास 2 सेल, तो मेरा वोल्टेज कितना हो गया? 3. ये मैंने अपने मन से उसी तरह से लूंगा, तो 3 था तो यहाँ 6 कर दिया. उसी तरह यहाँ पर 3 तो 4.5,
यहाँ पर 9 कर दिया। इन तीनों में मुझे यहाँ जो कर्सर में दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से कॉलम में R मिलेगा। ऐसे 4 वैल्यूज में लूंगा, 4 बार R आएगा और चारों बार R आपका सेम आएगा। और जब आप V और I को ग्राफ में प्लॉट करोगे, जब आप V और I को ग्राफ में प्लॉट करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। दैट स्ट्रेट लाइन is going to give us resistance. Let's increase the voltage to 4 volts. And let's check the reading again in the voltmeter and in our ammeter. Now the potential difference across the wire as measured by the voltmeter is 3.6 volts. And the current in the wire as measured by the ammeter is 100 milliamperes, which is 0.1 ampere. This is our third data point. Let's add it to the table of observations. Now let's increase the voltage to 6 volts. And we'll check the reading in the voltmeter and in the ammeter. As you can see, the potential difference across the wire is now 6 volts. And the current in the wire is 180 milliamperes, which is 0.18 ampere. This is our fourth data point. Let's fill it in our table. Now let's increase the voltage to 8 volts and check the reading in the voltmeter and in the ammeter. The potential difference across the wire is 8.4 volts as shown by the voltmeter. But this is a bit strange. How is the potential difference higher than 8 volts, which the voltage supply is giving us? I think it's probably because the voltage supply is a bit faulty. It's giving us a voltage higher than 8 volts, maybe around 9 volts. That's why the potential difference across the wire is 8.4 volts. But we are interested only in the potential difference across the wire. So for our experiment, it doesn't matter. And let's check the reading in the ammeter. It shows 240 milliamperes. So the current in the wire is 0.24 ampere. This is our fifth data point. Let's put it in our table. What can we conclude from this table? Now, if you look at this table, okay, this is, you can see that 0.3, 1.2 upon 0.3, 3.6 upon this, 6 upon 1 point this, and this. So what the, because this is an experimental values, okay? That's right. As the potential difference across the wire increases, the current in the wire also increases. Let's plot a graph of this table. We will plot a current versus potential difference graph. So we'll put potential difference on the x-axis and current on the y-axis. As you can see, the graph is approximately a straight line passing through. Now you can see that this is the graph where V is at x-axis, okay, and I is at y-axis, and from 9th standard it has been taught to you that ये जो line बनता है, ये जो slope आता है, this slope has direct relation with y-axis. Y में कौन है अभी? I. Through the origin. What can we conclude from this straight line graph? That's right. Since the graph is approximately a straight line, the current is directly proportional to the potential difference. The current is directly proportional to potential difference, that is one thing, and at every point if I calculate, अगर मैं हर point पे निकालूं तो ये मुझे जो value देगा ना, उसका term होता है, उसे कहते हैं conductance. और अगर यहाँ पर V होता, कहाँ पर? Y एक्सिस में, और X एक्सिस में I होता, जैसे मैंने बताया जो भी स्लोप होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एक्सिस फैक्टर, तब ये स्ट्रेट लाइन मुझे देता रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट के बीच का रिलेशन अभी देखेंगे इनवर्सली, लेकिन V का रिलेशन किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का R के साथ डायरेक्टली. And this is exactly what Ohm concluded from his experiment.
He also added the condition that temperature should be. Now, this is what the exact definition is coming up in your way. Okay, that's why since this law is not going to be fruitful everywhere, it has been prescribed at constant temperature and pressure. Constant. So Ohm's law states at a constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor. So we can write it mathematically like this. I is directly proportional to V, where I is the current and V is the potential difference. A directly proportional relation means that if the potential difference is doubled, then the current will also get doubled. If the potential difference is tripled, then the current will also get tripled. Similarly, what will happen if the potential difference is halved? Obviously, I hope you can now say the answer that if the potential difference is half, the current will be half. That's right. The current will also get halved. So I is directly proportional to V. Now we can also reverse this relation and write it as V is directly proportional to I. That is, the potential difference across a conductor is directly proportional to the current in the conductor. Now, why can we reverse this relation? Let's take a simple example to understand. Let's say you go to a shop to buy some apples. We can say that your bill is directly proportional to the number of apples you buy. That is, if you buy more apples, obviously your bill will be more. Now I can also reverse the relation and write it as the number of apples you buy is directly proportional to your bill. That is, if your bill is more, obviously you bought more apples. So we can reverse the relation. Now coming back to our discussion, we had current is directly proportional to the potential difference. And on reversing the relation, we get potential difference is directly proportional to the current. Now we can change the proportional relation into an equation by adding a constant. So we get V equal to R into I. So this is what we're looking for, resistance. This constant R is called the resistance of the conductor. That is the wire. So this is the mathematical relation of Ohm's law. But we usually remember it as V equal to IR. Now let's see how we can define the concept of resistance using Ohm's law. Let's place Ohm's law and the important formula V equal to I into R on our concept board. Let's see how we can define the concept of resistance using Ohm's law. Let's bring R to the left-hand side of the equation. So now you can see that R and I का रिश्ता बहुत से लोगों के लिए पढ़ाई और खुद का रिश्ता इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अगर दोनों बढ़ा हुआ रहेगा ना तो टकराहट होगी, हीट पैदा होगा. और ऐसा आपको कब दिखता है? गीजर में, माइक्रो ओवन में. उनकी जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं ना, वो प्योरली रेजिस्टर्स के बने हुए होते हैं, राइट? प्योरली रेजिस्टर्स के. और आपको पता है कि गीजर, माइक्रो ओवन, दे generate a good amount of heat energy और immediately. तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, करंट आया, और वो करंट छोटा मोटा करंट नहीं होता, अच्छा करंट विड्रॉ करता है. आपने अगर कभी माइक्रो ओवन की कनेक्टिविटी देखी हो या आपके गीजर की कनेक्टिविटी आपने ध्यान से देखी हो, तो एक तो वायर मोटा होता है और बिल्कुल स्विच बोर्ड उसके पास में बनाया जाता है और वो भी पावर प्लग होता है, पावर स्विच, सो दैट वो जो करंट निकलेगा वो भी ज्यादा है और जो हीट करने के लिए एलिमेंट है रेजिस्टर्स का बना हुआ है वो भी ज्यादा है. दोनों बराबर ताकतवर बंदे आपस में अगेंस्ट हैं, टकराएंगे और इमीडिएटली ये जो करंट एनर्जी दिया, जो स्विच ऑन करके आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया,
ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा आपके नेसेसिटी एनर्जी में, जिसको कहते हैं हीट एनर्जी. सो get R equal to V by I. So resistance of a conductor can be defined as the ratio of the potential difference applied across the ends of a conductor to the current flowing through the conductor. Now, based on this formula, the SI unit of resistance will be volt by ampere. This is called ohm and is denoted by the omega symbol. सिंबल का नाम ओमेगा है, और आपको बनाने में कठिनाई ना हो तो क्या करना है, 5 बनाइए, 2 बनाइए, जैसा मैं क्लास में बता दूंगा, और जोड़ दो. ऊपर से दोनों का सर जोड़ दो, आपको मिल जाएगा ओमेगा. As shown here. Now let's use our table of observations and find the resistance R at the different voltages. So we need to calculate the V by I ratio for each row in this table here. As you can see, the resistance value is approximately same at the different observation points. The resistance R नियरली सेम है, मतलब ये डिफरेंस ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये इसने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में किया है जहां पर टेम्परेचर का चेंजेस होता रहता है, इसलिए लिखा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ओके, तो अगर आप कभी लैब में कर रहे हो और आपका लैब का काम कंप्लीट नहीं है और आप किसी की दूसरी की कॉपी लेकर ग्राफ बनाकर आते हो, तो टीचर आपको पकड़ लेगा अगर आपका एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन बना तो प्रैक्टिकल में, क्योंकि वो बन ही नहीं सकता, क्योंकि आप देख सकते हो आर एग्जैक्ट कांस्टेंट नहीं है. of the wire in the black box is approximately 35 ohm. Now this is expected since the graph was approximately a straight line. So the ratio of V by I, that is the potential difference by current, will be constant. Can we also calculate the value of the resistance directly from the graph? Yes. Remember, the slope of a graph is change in Y. Now here I'm making a bit correction, okay, because it has to be like V upon I. तो ये ग्राफ हम अपने तरफ से देखेंगे. We'll be sharing the next video shortly. Okay, so there we will be observing this. ठीक है, just go through this before coming to the class, because यही हमारा next class का फंडा है.